करो ना। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है जिनमें बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ बैड लोन्स राइट ऑफ किया, दैट इज 10.42 लाख करोड़। एंड उन्होंने रिकवर सिर्फ किया 1.6 लाख करोड़। तो यहाँ पे बेसिकली हर 5 रुपए पे सिर्फ एक 1 रुपी उन्होंने क्या कहते हैं रिकवर किया। तो यहाँ पे बैड लोन्स की बात हो रही है कि लार्ज कॉर्पोरेशंस को लोन्स दे देते हैं बट उसको वापस कलेक्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। एंड जो रियल इशू है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है जो कि 90 डेज में रीपे नहीं हो पाते, उनको बोलते हैं। लीगल एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं, सिविल सूट्स फाइल किए जाते हैं और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। एक्शन लिया जाता है अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है, वहां पे भी क्या कहते हैं केसेस फाइल किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिकवरी रेट जो होता है प्राइवेट बैंक्स का वो बहुत कम होता है, पब्लिक बैंक्स का बहुत कम होता है। प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उनका बेटर होता है रिकवरी रेट। एंड जो गवर्नमेंट होती है वो राइट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स को राइट ऑफ करने के लिए मनी स्पेंड नहीं करती है। तो बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन को राइट ऑफ एंड वेव ऑफ करने में क्या डिफरेंस होता है, अगर कोई बता सकता है तो। ओके, सो लोन राइट ऑफ्स होता है कि बैंक की बैलेंस शीट से वो बस लोन हाँ। हट जाता है, तो हम्म। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट, बट ये एक टेम्परेरी मेजर है, इट इज नॉट द आइडियल मेजर। तो दिस गेट ट्रांसफर टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो फिर मेजर्स लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं कि उस लोन को आप फिर से रिवाइव कर पाओ, so, जो बोरोवर उसको रीपे करे। सो जो आपकी मतलब रीपेइंग ऑब्लिगेशन ऑफ द बोरोवर वो हट नहीं जाती इफ द लोन इज रिटन ऑफ, बट लोन वेवर में ऑब्लिगेशन हट जाती है, वो लोन पे कर दिया जाता है। तो दैट इज अ लोन वेवर एंड रिटन ऑफ, लाइक राइटिंग ऑफ द लोन्स। ठीक है, मानसी यू कैन से। ओके, सो हेयर इन द कोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था कि उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि पुणे जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाईपोल्स होने थे, उन्होंने इसके लिए रीजन बोला कि वहां पे अभी इलेक्शंस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बिजी विद द अदर पोल्स इन द कंट्री एंड दे आर इन प्रिपरेटरी एक्टिविटीज, जो अगले साल जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। सो इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो रीजन है दिस इज हार्डली टेनेबल, मतलब इसको हार्डली टॉलरेट किया जा सकता है। सो आप ये नहीं कर सकते हो कि अगर आप जनरल इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बाकी अगर बाई पोल्स हैं तो वो सब्सिडरी हो गए। इट नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक इक्वली होगा, आप इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक रिफॉर्म है जब हम बात करते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स में, सो इट इज बीइंग शेयर्ड कि तिहाड़ इज गोइंग टू रन आउटलेट्स एट द पेट्रोल पंप्स एंड इनमेट्स जो होंगे जेल इनमेट्स दे आर गोइंग टू मैन इट एंड रन इट एंड मैनेज इट। सो एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म हमने हमेशा बात करी है कि प्रिजन रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में कि स्किल्स प्रोवाइड की जाती है प्रिजनर्स को, बट ये एक अगेन एक अच्छा पार्ट ऑफ रिफॉर्म होगा कि स्पेसिफिकली पेट्रोल पंप्स पे आउटलेट्स ओपन किए जाएंगे एंड दिस वुड ऑल्सो एनेबल देम टू अर्न इनकम ऑल्सो। एंड जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो खुद उसको एक्चुअली सेल कर पाएंगे। सो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अगेन पार्ट ऑफ ओपन प्रिजन ऑल्सो, एक उस वो आइडिया की एप्लीकेशन भी हम बोल सकते हैं। Then this we have taken up global partnership हो रही है, artificial intelligence summit, India is the chair, so we'll be harnessing the power of AI for economic transmission। कैसे हम मतलब AI हमें और benefit और aid कर सकती है, it can help in increasing the efficiency, catalyzing AI innovation, digital जो हमारा public infrastructure है उसमें कैसे help करेगी AI, and then it would enable the development of safe and trusted accountable AI models, ethical AI को हम कैसे यूज करेंगे एंड मेक AI इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम टैलेंट पूल रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक एरियाज है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। दिस वी हैव सीन। Now, what ails India's approach to the universal health coverage? So, क्या challenges हैं? So, यहाँ पे challenges mentioned है, poorly maintained registers of doctors है, to opaque style of functioning of the regulatory bodies, एंड यहाँ पे एक स्टडी की गई है बाय द विधि सेंटर फॉर द लीगल पॉलिसी ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। सो जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है इट एंड्स अप पोजिंग हेसल्स फॉर द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स अलाइक। तो हम डिजिटल हेल्थ आईडीज क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ स्टैक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो वो इस चैलेंज को एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट बॉडीज नेशनल मेडिकल
register, National Medical Commission. This was established 4 years ago. And apart from this, यहाँ पे issues that regulatory and oversight bodies they deal with. So यहाँ पे examples consumer commissions में medical negligence, so this is clearly mentioned. Regulators of hospitals में registration issues, non-compliance, medical councils में violation of professional code of conduct, so that is dealt by the medical councils. And क्या एक्शंस वो ले सकते हैं, दिस इज मेंशन. सो मैकेनिज्म सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिपेंसीज एंड क्या गैप्स एग्जिस्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई एप्लीकेशंस रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट मैकेनिज्म्स के ऊपर आरटीआई फाइल की गई, तो दैट वेंट अनआंसर्ड एंड दे वर रिजेक्टेड ऑन द फ्लिम्जी ग्राउंड्स. तो फर्स्टली अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थ्रू दी आरटीआई. This is one sign of opaqueness, and it also found that there was a mismatch in the number of registered medical practitioners per Indian medical register, and the information जो receive हुई through the RTI application. So जो 17 state medical council थे, they did not respond also. So मतलब like एक proper uniform standard हमें नहीं देखने को मिल रहा है. यहाँ पे डेटा के अराउंड ही बात हो रही है, ओपेकनेस के अराउंड हम ट्रांसपेरेंसी डिजिटाइजेशन के थ्रू और कैसे प्रमोट कर सकते हैं. And apart from this, inspection of healthcare facilities होना चाहिए. So states like Kerala, Maharashtra, सिर्फ वहीं पे periodically inspections किए जा रहे हैं. And there is inconsistencies in the standards of evidence also. So no evidence was recorded in nearly 60% of the consumer judgments that were analyzed by this body. So ये कुछ challenges है जब हम बात करते हैं, actualizing or realizing the universal health coverage. So if we have more data, so we can accordingly plan and address the challenges that we face. So we are seeing कि global economic जो economic picture है, that is not so rosy, but despite that, India की जो stock market है, recently we see कि 70,000 mark has been achieved by Sensex, जो index है. BSE में जो सारी listed companies हैं, उनकी performance को indicate करते हैं. So उसके बाद भी we are seeing कि Indian markets, they are showing resilience. So this is one example we can cite ki example of the resilient Indian economy despite the global headwinds. Then oil and gas, here is the signs you've missed. So yahan pe if we talk about this, so lethal humidity or heat, they're already here. People are dying from this deadly combination, and how इसको हम leverage कर सकते हैं यहाँ पे बात की जा रही है. एक important keyword था positive power plan. So it outlines clear steps जो world leaders को लेने चाहिए to phase out fossil fuels and achieve real action. So this was a keyword, the positive power plan. So that's all for the day from Times of India newspaper. Karuna, you can specify keywords for today. In terms of geography, we talked about rice fortification, and an example is golden rice. Then in terms of lakes, we talked about two lakes, that is Loktak Lake, that is an oxbow wetland and is the largest freshwater lake in South Asia. इसके पास जो national park located है, that is Cable Lamjau National Park. Then we talked about Chilika Lake. It is the brackish water type lake. Then we also talked about Congo River and Congo Basin. Then Congo Basin से regarding ये अभी आया भी था पेपर में. तो Congo Basin जो है सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है. 6 countries, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, these are the part of Congo Basin. It is the largest carbon sink in the world. That is all from geography perspective. Mansi? I think Oshik, you can move forward. I've like done with Regarding the the Times of regarding the international relation, we discussed why Putin have visited Saudi Arabia and UAE and what are the implications on the oil market, on the multilateral institution, even de-dollarization in the future, and BRICS currency. Then we discuss about the various Kashmir history and insurgency issue 1980s, 90s, its connection with the Afghanistan jihad and Soviet invasion of the Afghanistan and aftermath. Then regarding important words is Lookist policy, Actist, neighborhood first policy, connectivity infrastructure, Gujarat doctrine, idealism in foreign policy. For example, India treating of its neighbor in a very idealistic manner. India treating China not as a strategic adversary, but as a partner.
in 1950s, 60s, and also India being a member of the NAM, deciding member of NAM, non-aligned movement. So this is from my side. Okay, so I would also like to add up about कि we took up the Odisha model of economic growth and development. We talked about challenges, disaster management, poverty, nutritional insecurity, and revenue deficit. So it has transformed from all these challenges to we say कि there is Kalia scheme which is being run in state of Odisha, rice bowl जाना जाता है, coastal zone protection measures लिए जा रहे हैं, crop planning की जा रही है, performance budgeting method adopt किए जा रहे हैं. So this becomes one model of economic growth. And we also talked about Supreme Court ने बोला in context of reservation की adequate representation के basis पे reservation should be provided as opposed to the proportionate representation. So that's all that I would like to Okay. add up. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do tune to Ansarkari.